Up till now, we have discussed what energy is. हमें work का पता है, energy का पता है, हमें power का पता है. And we have just named the basic two forms of mechanical energy, that is kinetic and potential energy. So in this slide, we'll discuss in details what is kinetic energy and what is potential energy. So kinetic energy is defined as a type of energy in a body due to its velocity. फॉर्मूला हम इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर जब यूज करते हैं दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे m जो है दैट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. रोटेशनल एनालॉग ऑफ दिस फॉर्मूला इज हाफ i ओमेगा स्क्वायर, जिसमें i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. The vibrational analog of the same formula is half k x naught squared minus x squared. यहाँ पे जो k है that is spring constant, x naught is the amplitude यानी जो maximum displacement है, और x जो है that is any instantaneous displacement. So in this chapter we'll mainly concern ourselves with this formula, or the rest of formula we'll discuss in the respective chapters inshallah. So यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं कि एक मीटियोर है, इसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी है, वॉकिंग में, फॉलिंग में, थ्रोइंग अ बॉल, फ्लाइंग इन एरोप्लेन, सब में एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की. उस वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी है इस बॉडी में इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव द पोटेंशियल एनर्जी. जैसे काइनेटिक एनर्जी वाज ड्यू टू वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ड्यू टू मोशन बट इट इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी. अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें दैट इज mgh, जहाँ पे m जो है दैट इज मास, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h इज द हाइट. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर. यहाँ पे अगेन जो k है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट. एग्जांपल हम देख लेते हैं. दिस इज अ रोलर कोस्टर, एक सर्टेन हाइट पे है तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है. एक डैम ने वाटर को होल्ड किया हुआ है, अगेन इट इज हाई पोजीशन सो वाटर हैज सम सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी. एप्पल्स ऑन अ ट्री आर अगेन ऑन सम सर्टेन हाइट. बो एंड एरो के अंदर जब हम उसको स्ट्रेच किए रखते हैं तो उसके पास एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और स्लिंग शॉट के अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. नाउ वी हैव अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. इसमें में कहा गया है कि हैंडमेड बोट rowing at 10 meters per second has a mass of 1.414 kilograms. Find its kinetic energy. The four options are 1 joules, 70 joules, 700 joules or 1000 joules. The correct option is option B, 70 joules. इसका solution हम देख लेते हैं. So the correct solution to this problem is simply by the use of the formula जो हमने कहा था कि translational kinetic energy का formula है half mv squared. So this is half m जो है that is mass of the body that is 1.4 kilograms, और जो velocity है that was 10 meters per second. So इस formula का use करते हुए जो हमारे पास kinetic energy आएगी that is 70 joules. So this is the kinetic energy of the handmade boat. So now we have gravitational potential energy जो कि एक potential energy की एक सब type है. So the energy in a body due to its height above the surface of earth it is called gravitational potential energy. Potential energy हमेशा high potential और low potential के दरम्यान होती है, and in the gravitational field of earth the high potential is above the surface of earth at a certain height. So it is always measured from a zero level reference point. जीरो लेवल रेफरेंस जो पॉइंट है उसे हम या तो सरफेस ऑफ अर्थ को लेते हैं या फिर इन सम केसेस वी कैन टेक इंफिनिटी एज द जीरो लेवल पॉइंट. The formula of gravitational potential energy is mgh, where m is the mass of body, g is the gravitational acceleration and h is the height above the surface of earth. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a body of mass m it is above a certain height h above the surface of earth. So gravitational potential energy is mgh. So what is work energy principle? हम कहते हैं कि whenever work is done on a body it results in increase in its kinetic or potential energy. जैसे कि हमने शुरू में cases of work done में देखा था कि work done is equal to the change in kinetic energy या फिर change in potential energy.
तो किसी भी बॉडी पे अगर हम वर्क करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ एनर्जी लेवल। इस केस में एक MDCAT के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। यानी अगर एक रेस्ट से एक बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलोसिटी एट अ सर्टेन हाइट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। यहाँ पे हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के डायग्राम देख सकते हैं कि एक साइक्लिस्ट है जो कि हिल के ऊपर चढ़ रहा है। अब यहाँ पे वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है अपनी साइकिल पे, यानी वो एनर्जी इनपुट कर रहा है उसके अंदर टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। और यहाँ पे सारा का सारा जो वर्क डन उसने किया है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी कैन बी सीन अगर वो यहाँ पे आके साइकिल को फ्रीली नीचे जाने देता है तो यहाँ पे the velocity of the bicycle it keeps on increasing, यानी kinetic energy increase होती जा रही है, तो potential energy is being converted to kinetic energy। ये हम कहते हैं कि the work done जो कि person ने अपनी साइकिल पे किया था is equal to change in kinetic and potential energy। यानी यहाँ पे potential energy increase हुई, उसके बाद वही energy convert हो गई into kinetic energy। So this is all about the work energy principle। So problem is that a body falls from 5 meters above the ground. Find its velocity when it is just about to strike the ground. 1 meter per second, 10, 100 or 1000 meters per second. Correct option is option B, 10 meters per second। इसका solution हमने कहा था कि velocity का formula है the square root of 2gh। 2 is a constant, g की वैल्यू हमें पता है, it is 10 meter per second squared and height we have given 5 meters। So velocity equals to square root of 2 into 10 into 5. So 2 5s are 10, 10 10s are 100. So 100 ka square root, that is 10 meters per second. So our answer is that the velocity of the object just is 10 meters per second। Now what is absolute potential energy? Absolute जब भी हम कहते हैं we refer it we say it by the reference of a single point। तो इसके अंदर हम कहते हैं the work done in bringing a body from infinity to a certain point in Earth's gravitational field is called the absolute potential energy at that point। इसका फॉर्मूला जो हमें गिवन है that is U equals to minus G M capital M over R। यहाँ पे G जो है that is gravitational constant, M is the mass of body, capital M is the mass of Earth, जिस चीज की भी gravitational field है इसका mass, and R is the distance of that point from the center or the zero reference point। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि this is R, यानी किसी भी दो पॉइंट्स का डिफरेंस, and absolute potential energy is negative of G small m capital M over R। This is all about this slide। In the next slide we'll conclude this chapter by discussing the remaining formula and the remaining concepts। Thank you।